Okay, welcome students. We were doing permutation combination. So far what we have done is this much, that permutation combination consists of 4 topics, 4 subpart. One is called pure logic, permutation, combination and mixed sums. And especially हम लोग ने what we have done last time was a pure logic. First thing we have done in that was 5 true and false questions. How many different sequence of answers are possible? So we understood that there are 2:5 different sequence of answers are possible in that case. Now to pass the exam, student have to pass in the subject 1, subject 2, subject 3. How many different ways students can fail the exam? So the students can fail the exam in, there are total 2:8, 2:3 possibilities, which is 8. But one possibility was passing. So there are 7 ways student can fail the exam. Next question was a combination lock. How many different ways you can set a passcode for a combination lock which has 3 wheels numbered from 0 to 9. So there are 3 wheels, each can have a number from 0 to 9. That means there are 10 options for this, 10 options for the second wheel, 10 options for the third wheel. So altogether there are 10 is to 1,000 option. Yeah, 1,000 ways of doing this. Next, एक भैया है सोहम. He wants to guess उसकी girlfriend A का landline number. So what he knows is this 2 thing, that her number doesn't start with 1 or 0, and number like 555, 786 and 911 are not the starting series. So number is not starting with 555, 786 or 911. So we have broken this sum into 2 parts. One part was there is no problem here. On this side there is no problem. So there are 10 is to 5 ways we can do this. And for this side we have all possibilities. 0 and 1 cannot come here. So that means there are 800 possibilities minus these 3 numbers. So 800 minus 3, which is 797, multiplied by 10 raised to 5. That is your answer. बाद में सोहम को मिलने जाना है उसके इधर, and he has 3 cap, 5 shorts and 4 trousers. And how many ways he can dress up? So basically he has 3 options here, 5 options here, and altogether 60 options in which he can dress up himself. Okay. So now let us talk about this in exercise by exercise. Okay. So we are looking at the exercise 8.1. Okay. And 8.1 exercise deals with only factorial. Factorial is something which you already know. We have done that. 5 factorial is nothing but 5, 4, 3, 2, 1. Correct? 5 factorial can also be written as 5 times 4 factorial, and 5 factorial can also be written 5 into 4 into 3 factorial भी लिख सकते हैं हम लोग. So I can understand 4 factorial can also be written as 5 factorial upon 5. Do you understand that part? So that was very easy. Okay. So there are many questions on this. Okay. The first question which I will suggest I should do from this exercise. Okay. The first question which I think I should do is this. Okay. Convert into factorial. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इसको आप factorial में लिखो. Convert this guy into factorial. So sir, इसको कैसे लिख पाएंगे? So first thing, you reverse the order. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Anyone, any idea how do you convert this into factorial? 12 factorial into 5 factorial upon 5 factorial. No. You are close, but 12 factorial upon 5 factorial. That's right. What boy is doing is, he's saying multiply by 5, 4, 3, 2, and 1. So I multiplied by this guy extra. So I should subtract, I should divide by that, which is eventually nothing but 12 factorial divided by 5 factorial. It's a huge answer. Let's see the second sum of this.
The second sum was this, was 3, 6, 9, 12, 15, 18. Write this into factorials. Anyone? So सब में से 3 निकाल, 3 निकाल, 3 निकाल, 3 निकाल, 3 निकाल, 3 निकाल. All together 3 raised to 6 कॉमन ले लिया मैंने. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 6. I'll write this way: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Do you understand me that? So if Yes, you want sir. to really write this into factorial, this will be nothing but 3 raised to 6 multiplied by 6 factorial. ठीक है, ऐसे सब फालतू सम से इसमें. तो अपने 3 raised to 6 क्यों लिखा? बिकॉज इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा, इसमें से 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 निकलेगा, ऑल टुगेदर 3 6 बार निकलेगा ना, तो 3 raised to 6 होगा. Okay, so now let's see the next level. The question here is find the value of n if the first subpart is very simple. अच्छा, factorial को और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, which I'll show it to you. If they want to write n factorial, they can write like this also. That's factorial. That's the notation of factorial. Another notation. Okay, but I will not prefer writing like that, so I'll write this: n plus 1 factorial is equal to 20 times n minus 1 factorial. So how do we solve this? So remember the rule: जो भी बड़ा है उसको एक्सपांड करो. ठीक है, जो भी बड़ा है उसको एक्सपांड करो. ओके, सो नाउ लेट अस सी ये क्या करना है. n plus 1 factorial is equal to 20 over n minus 1 factorial. भाई ये दोनों में बड़ा कौन सा है? कोई बोलेगा मेरे को? n plus 1. सो अभी आपको बड़ा वाले को क्या करना है? n plus 1, बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? n, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? n minus 1 d factorial तक लेके जाने का. 20. Do you understand me that? जैसे कि समझो if I have 7 factorial divided by 5 factorial, I can write this 7 factorial as 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial और ये उड़ा दूं. Are you understanding that? The same वस्तु यहाँ पे किया है मैंने. So you'll get n plus 1 into n equal to 20. Now there are two ways of solving. One is by intuition. Intuition works very well, especially when you are dealing with the natural number. So when you understand intuition, में बता रहा हूँ कैसे करते हैं. You can factorize this guy as a product of two consecutive natural number. I know sir, it is 2 into 10. अरे गधे, ये 2 into 10 natural number है लेकिन consecutive नहीं है. So you have to break it as 5 into 4. ठीक है, तो बड़ा वाले को बड़ा वाले के साथ कंपेयर करो और छोटे वाले को छोटे वाले के साथ कंपेयर करो. Any case you will get n equal to 4. This is one way of solving. Okay, वापस से. These are two consecutive natural numbers, so you factorize this guy also as a two consecutive natural number में, product of two consecutive natural number, and that is only a unique way of doing it. Hence this intuition method works. But actual way of solving this was n square plus n minus 20 equal to 0 and factorize. So n plus 5 into n minus 4 equal to 0. Therefore n equal to minus 5 or n equal to 4. N cannot be minus 5 because n was a natural number. So it cannot be minus 5, therefore n is equal to 4, and that's the answer. This is the actual way of solving. I'm okay with both the method, but intuition I showed it to you so that I can use this later on in difficult sums. ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है सर, बहुत इजी लग रहा है मेरे को, तो मैथ्स ही बहुत सिंपल लग रहा है. अग्री, इट्स वेरी सिंपल. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज दिस. आई थिंक इतने में हो जाएगा. फोर्थ सम, एंड दिस इज लास्ट सम ऑफ दिस कैटेगरी. Then we are switching the next type, going to the next type. Okay, so question is 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial
is equal to n by 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? एकदम सिंपल है, आपको n का वैल्यू फाइंड करना है ना, सो n को अकेला करो तो बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल थ्रू आउट, so I'll get 8 factorial divided by 6 factorial. I think you should know how to simplify that. This will be 8 factorial divided by 7 factorial, and this will be n only. Now this can be simplified by something which I showed you here. वो तरीके से आप simplify कर सकते हैं इसको. So this will be nothing but 8 into, anybody can you tell me? 7 into 6 factorial. 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial. factorial. 6 into 5 into 4 और ये इसको क्या करें? तू 8 कल into आना 6 into 5 वाले 7 तब पड़ जाएगा. 8 into 7 factorial. कहाँ तक एक्सपांड करना है उसकी भी कुछ लिमिट होती है भाई. नीचे 6 फैक्टोरियल आ गया तो फिर 6 into 5 क्यों लिख रहा है? प्रणीत ध्यान दे बेटा, गड़बड़ नहीं. अब इसको क्या करेंगे? 8 into क्या लिखो? 7 factorial. 7 factorial. फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, खत्म हो गया. गलती मार लेगा. सो ये हो जाएगा 56 प्लस 8 कितना होता है रे? 64. ओके फाइन, सो दैट इज योर आंसर. एकदम सिंपल लगा ये सर, ये तो बहुत इजी मैथड है. क्या मैथ सिखा रहे हो? अभी एक सिंपल सा लॉजिक है, उसको बोलते हैं, नाम बहुत बड़ा है. द नेक्स्ट कांसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग. ओके, बहुत खतरनाक लैंग्वेज है. आई विल सिंप्लीफाई. सिंपली जब भी एंड होगा, दो स्टेटमेंट के बीच में एंड है तो यू मल्टीप्लाई द थिंग्स, एंड जब भी दो स्टेटमेंट के बीच में और है और यू जस्ट ऐड देम अप. दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. मतलब थियरम ऐसा बोलता है, if the first task is done in m ways and the next task is done in n ways, then the task m and n together can be done in m into n ways. And if the first task is done in m ways, second task is done in or in n ways, then the task m or n can be done in m plus n ways. Khatam. This is a fundamental way of counting. ठीक है, इसमें ज्यादा रोने का कुछ फायदा नहीं है. Let us solve sums on this. सर ये कौन से उसका पार्ट है? हाँ मैथ्स का. हाँ सॉरी, क्वेश्चन कौन से चैप्टर का पार्ट है? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ. बट ये सब प्योर लॉजिक में ही है ना? या ये प्योर लॉजिक में भी लगता है. ये दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब सब जगह पे लगेगा. परम्यूटेशन में भी लगेगा, कॉम्बिनेशन में भी लगेगा, पूरी लाइफ में लगेगा ये सब जगह पे. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट few sums before we go ahead. Okay, so let's talk about, okay, first is digit formation. This is a very nice type, so let me write with red. हाँ, बहुत ही मस्त है. इसमें आप खतरनाक लेवल पे डिफिकल्टी ले जा सकते हैं. ठीक है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं. सपोज I have the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. How many 4 digits number can be formed? So first question is this: how many 4 digit numbers can be formed by using this? So question makes sense? Yes sir, it makes sense. How many 4 digit number can be formed by using these digits? लेकिन आपने एक वस्तु तो पूछा ही नहीं, सर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है या नहीं अलाउड है? Are you understanding the question? Is the repetition of the digit is allowed or not allowed? So दो पार्ट आएंगे. First part, when the repetition is allowed. Okay, so
What do you think? जब भी नहीं बोला रहेगा तो क्या होएगा? Repetition allow रहेगा नहीं रहेगा? If they do not give this option, allowed. तो allowed रहेगा sir, allowed रहेगा. then the repetition is allowed. Correct. अभी so let us see the first type called repetition is allowed. And second type, repetition is not allowed. Okay, now please understand. Let us go back to basic. Repetition is allowed is my pure logic sum. Repetition is not allowed is my permutation sum. I am going to do this with the formula later on. ठीक है, but अभी मैं आपको बता देता हूँ कि without formula this can be handled. Low level of sums can be handled without the formula also. Okay, so देखो 1 2 3 4 चार डिजिट है. फर्स्ट डिजिट के लिए कितना ऑप्शन है अपने पास भाई? 1 2 3 4 5 6 7 7. सेकंड वाले के लिए 7, थर्ड वाले के लिए 7, फोर्थ वाले के लिए 7. ऑल टुगेदर 7 raised to 4 options are there. This many 4 digit number are there. एकदम क्लियर हो गया सर? इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत सिंपल था मैथ्स. इसमें क्या रहेगा? इसके लिए कितना ऑप्शंस है? 7. 6. अभी नेक्स्ट वाले के लिए कितना ऑप्शंस है? 6. Yeah, obviously the digit I have used here that cannot be used, so that means इसके लिए there are 6 options. इसके लिए whatever I have used here and here cannot be used, so it will be 5, and whatever I have used here and here cannot be used. All of you understood that when the repetition of the digit is not on, the number will go reducing. Okay, fine. Whatever is the answer. I think it's going to be 7 factorial by 3 factorial. I don't know what is it. What is it? 840. 840. ठीक है, fine. So there are 840 different numbers of 4 digit numbers are there without repetition from the digits 1 to 7. Okay, बहुत अच्छे. Now let's go ahead for the next level of sums. ये समझ में आया ना? Okay, ये बहुत अच्छे digits है यार. अभी इसमें थोड़े next level पे जाएंगे. तो भाई अभी मेरे पास क्या है? Same question है. How many 4 digit numbers? भाई बाय द वे 4 डिजिट की जगह में 5 डिजिट आएगा तो आपको चक्कर बक्कर आएगा नहीं ना? सबको आएगा ना सॉल्व करने को? आंसर आ जाएगा. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 0 2 4 5 6 7 8. Okay, let's say if the repetition is allowed. अपना ये स्टैंडर्ड रहेगा. कैन आई राइट? ओके, if the repetition is allowed, if the repetition is not allowed. Repetition allowed को नंबर 1 बोल देंगे और उसको नंबर 2 बोल देंगे. चलेगा ना? Not writing that part. Okay. Okay. So now what is the problem? Okay. थोड़ा सोचो इसके बारे में. नहीं सोप्ती नहीं बोलेगा. कोई और बोलेगा. So the first digit. Wait, Laksh has got more marks than you. Laksh will tell me. Okay. So Laksh try करेगा. Yeah, tell me. No, I said no, sir. Okay, fine. ठीक है. Try तो करेगा. क्या तो मार. Nice, sir. So let Pranit try. He is too eager to answer. Okay, fine. So let us see. How many options are there for this digit, this place? 6 sir. 6. एकदम clear है. 6 options है. Why? Because Yes, 0 sir. cannot come here. And Yes, then sir. there are 7, then 7, and then 7 options. Okay, so that was 6 into 7 raised to 3. That's the answer then. That was so simple. Laksh could have tried that. What about this guy? So for this, there are 6 options. So, okay, fine. No, it's not understood. I didn't get the first one. The first one I didn't get. You tell me, who is this? So Ranveer. Eh? Ranveer. New boy? Yeah, last week I joined. Okay, fine. So listen. So there are 7 digits. 0 1 2 3 sorry 1 2 3 4 5 6 7 digits. उसमें से 0 नहीं लगा सकता यहाँ पे. Why? Because if 0 appears here, the number becomes 3 digit number, right? Getting it?
So 0 cannot occupy the thousands place. Correct? Okay. So यहाँ Yeah, के yeah. लिए options Okay. है 6 options है. Now then I can have 0 here. You can take 7 That because means- 0, 3. Yeah. 0 भी allowed है and everything else is also allowed. ठीक है? So that's how the logic is going to be. अभी समझ में आया बेटा? Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. यहाँ Got पे it. 6 into 1. 6. यहाँ पे 0 cannot Yes. come. So there are 7 options. Yes. Then उसके बाद कितने options रहेंगे? 6 sir. 6. Now 0 can come, but the some number which I've used here that cannot come here. 5. Suppose if I've used 5 here, so that means I cannot use 5, but I can use 0 here. That means the number of options are still 6. I got that. And then there are 5. 5 and Then 4. there are 4. Yes. So is that understood by everybody? Yes, sir. Okay, fine. Got it, sir. This was very easy. Sir, इतना लल्लू लल्लू क्या सिखा रहा हो? थोड़ा टफ सिखाओ. Okay, fine. मैं सिखा रहा हूँ. So that was very important one. Now let's see the next concept. सर हाँ बोलो. सर ये पहले वाले में वो आप 6 से चालू क्यों करते हो? वो पार्ट नहीं समझ में आया, एक बार बताओगे? अरे सुनना मेरी बात. There are हाँ. 7 number है. Can you put 0 here and write a number like 0, 1, 2, 3? Sorry, 0, 2. ये 0, 2, 5, 6 ये number allowed है. Oh हाँ, then it's not a 4-digit number, right? हाँ तो वही बोल रहा था मैं. गाना गा के सुनाया क्या तेरे को मैंने? ठीक है. अच्छा, sorry sir. नहीं ऐसे डाउट पूछेगा तो Second चलेगा. part, ऐसे कोई could you प्रॉब्लम नहीं है. repeat? So, did you get the second part? Okay, fine. Now let us repeat the second part again. Okay. Suppose I don't have to use. You understood why there will be 6 here? Because 0 cannot got that. occupy. Yeah. So which number you want here instead of 0? Which number you want? यहाँ पे कौन सा नंबर डालूं? तू बोल. Sir 5 डाल दो या 6 डाल दो. Let's put 6 here. नहीं 6 नहीं, थोड़ा confusion रहेगा. 4 डाल देते हैं. Now for this unit, this place, I can have 0, but I cannot use 4. Why? Because 4 is already used. This is a type where repetition is not allowed. Correct? If you don't want repetition to be there, so you cannot have 4 here, but you can have 0 here. So that means there are 6 options here. Now these two numbers cannot be there. So then there are 5 options are there. 5 and 4. 4 options are there. I understood everything. Okay, fine. Very good. So 6, 5, 4 is my answer. Okay, good. अरे ये पेज क्यों बार-बार घूम रहा है? Okay. Okay. Now, अभी इसमें थोड़ा एक बाप लेवल पे जाएंगे. How many 4-digit number नहीं? So sorry, I will change it bit. थोड़ा change कर देंगे इसमें. पहले तो ये गंदा निकाल देंगे. इसमें थोड़ा change कर देंगे. हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे यहाँ पे करेंगे पेस्ट. ठीक है. और ये जाएगा इरेज और ये जाएगा थोड़ा इधर और यहाँ पे आ जाएगा even. How many even 4-digit numbers are there? By using 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8. जो भी आंसर आ जाएगा उसका आधा कर देंगे. नहीं तू ऐसा नहीं करेगा यार. तू क्या छोकरा कौन है? कौन बोल रही है? सर मैं बोला सर कबीर. अरे यार सोच ना कितने सारे इवन नंबर डाल दिए मैंने. इनफैक्ट सारे इवन नंबर डाल दिए. लास्ट के डिजिट में सिर्फ इवन नंबर्स लेंगे. हाफ तू बचपन में करता था, 10th में करता था. अरे जब ये पूरे 0 to 9 नंबर थे तभी. अभी ऐसा नहीं कर सकते. अभी आंख बंद करके तीर मत चला. सर लास्ट के डिजिट में सिर्फ इवन नंबर्स को लेंगे. यस बॉय. ये कौन बोल रहा है? इतना स्मार्ट बच्चा कौन है अपने क्लास में? आयुष. है
अरे नाम तो बोलो, क्या आयुष शर्मा रहे हो? हैं? आयुष आयुष, आयुष, गुड बेटा, दैट्स राइट. हाँ, तो अभी देखो 4 डिजिट नंबर चाहिए सर. फर्स्ट वाला मतलब क्या? रिपीटेशन. बोलो. अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, अलाउड है. अलाउड. अलाउड है, अलाउड है. ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है. ठीक है, मेरे को इवन नंबर चाहिए. तो यहाँ पे कितना ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास सर? यहाँ पे 6 ऑप्शंस ही रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 0 कैन नॉट कम. यहाँ पे 7 सर 7, 7 यहाँ पे 7 7, और यहाँ पे 5 5. 5 1 2 3 4 5 even numbers are there. So that's your answer. Now लफड़ा होता है ये केस में. मतलब क्या? अभी मेरे को इवन नंबर्स भी चाहिए एंड रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है. ठीक है, तो इसको हम लोग 2 केस में कंसीडर कर सकते हैं. केस 1, when 0 is here. अगर 0 यहाँ पे डाल दिया है तो that can be done in one way. How many places are there for this guy? 6 ways. 6 How many places are there for this guy? 5 How many places are there for this guy now? 4 And यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी आ गया है. ठीक है. Case 2. Sir, एक second, can you repeat? Case 1, when 0 is at unit place. When 0 is at unit place, वो कैसे करने का? You want me to repeat it? Suppose Yes, sir. 0 at unit place, that can be placed fixed by one options only. 0 डाल और कुछ नहीं. तो इस ये प्लेस के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन है, because I have to choose from this. ये ऑप्शंस के लिए I cannot have 0. You understand? Because 0 is already there, and I cannot use the one which I've used already here. Sir, I am understanding everything now. Okay, good. So there are 5 options and then 4 options here. Okay, fine. Now, suppose if 0 is case number 2. Achha, select. When 0 is not at unit place. तो 0 यहाँ तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो 6 ऑप्शंस है. ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक इवन नंबर चाहिए. द इवन नंबर नाउ ऑप्शंस आर अवेलेबल इज 2, थोड़ा बड़ा, 4, 6 एंड 8. ये 4 में से एक नंबर को यहाँ पे पटकने का है. हाउ मेनी वेज दैट आई कैन डू? डोंट डू दिस फर्स्ट. How many ways I can petrify one of this number? 1, 2, 4, 6 or 8? 4 ways I can do that task. Very clearly? Okay. Now, I cannot use one of this. I already used it here. Suppose I've used 6 here. So I cannot have 6 here. I cannot even have 0 here. So this place can be filled up by 5 options. Then, now I can use 0 here. So 5 options again. 5 Then 4 options here. Are you with me? थोड़े टफ लेवल पे जा रहे हैं हम लोग. So why वापस can't एक बार 0 रिपीट be करो. used on the first place? अबे तो 3 डिजिट रहेगा ना. क्या छोड़ रहा है 3 digit कर? तेरे को थर्ड में भेजूंगा मैं वापस से. हाँ, नॉनसेंस. सुन मेरी बात. I have even, I want even number 2, 4, 6, 8 में से एक रहेगा यहाँ पे. तो उसके लिए मतलब 4 ऑप्शन है ये यूनिट प्लेस के लिए. ठीक है. Suppose I've utilized 6 here. Use a different marker. Okay. Suppose if I utilize 6 here, that means for this place I cannot use 0. I cannot even use 6. Correct? Because 6 is at unit place and repetition is not allowed. So for this place I have now 5 options. For this place I can use 0, but I cannot use this guy 6, and I cannot use this guy which I've used here. So 5 options again, and then 4 options are there. So this is how you are going to
राइट। ये लॉजिक है बेटा, आपको लिखना है इसको, एंड यू नो समथिंग दैट यू नो, थोड़ा अपना अपना हाथ थोड़ा तंग है इसमें इंग्लिश में, तो यू नीड टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड एक्सप्लेन द आंसर। ये बकवास लिखने का, यूनिट प्लेस पे 6 डालो, इस पे ये डालो, उस पे वो डालो, बट इन अ गुड इंग्लिश लैंग्वेज। सर वो जो फर्स्ट डिजिट का प्लेस होगा वहां पर 0 और 6 नहीं आएगा ना, तो वो 4 होगा ना सर? क्या? वो जो हाँ, तो फर्स्ट वही डिजिट लिखा है लिखा ना यहाँ पे, 0 भी नहीं होगा, 4 ऑप्शंस है यहाँ पे। दिस इज 4 आई हैव रिटन हियर यहाँ पे। हाँ सर, क्योंकि वहां यहाँ पे पे बोला 0 भी नहीं होगा और वहां पे 6 भी नहीं होगा ना, तो 2 चीजें सपोज निकल गए और टोटल 5 तो इवन नंबर्स है, तो 3 ही बचेंगे ना। अबे गधे, हाँ अच्छा, ओके, अंडरस्टूड, सॉरी, अंडरस्टूड। 1 2 3 4 5 आएगा ना, 5 ऑप्शंस आएगा हाँ ना। हाँ, समझा समझा सर, हाँ समझा। व्हाट लगा रहा है मैथ्स की? ओके ठीक है, अभी थोड़ा और जाएंगे, सर थोड़ा मुझे एक डिटेल में। क्वेश्चन है बोलना बेटा। सर, what if we don't put even number in the first place? हाँ, if you don't take care of the, if you don't want even number, No, like we were considering that in the first digit, if we don't use 6 or 0, because we already use 6 in the last digit. yeah, But what if we don't want to start with an even number? so the question is something, question demands that you want even number, right? Even number in the end, right? But not in the first. हाँ, अच्छा यहाँ पे तो कुछ भी चलेगा ना, 5 भी चलेगा बेटा। I've taken care of that. 5 can come here, even 7 can come here. Number can start with 7, that's fine. Okay. There is a restriction only if the number is even, matlab only the unit place has to be even. So therefore I have to take 2 separate cases here. There is absolutely no problem. Hello? Yes. Yes. क्लास में कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए क्लास में। हाँ ठीक है, 5:30 के बाद। ओके, थोड़ा अभी और थोड़ा डिटेल में करेंगे हम लोग। Okay, so now let us see the next part. We are going to start with the formula base. Okay, so that's the next part called permutation. Okay, so how do we do this? तो पहले एक एग्जांपल बता दो, फॉर्मूला क्या होता है। n ऑब्जेक्ट्स में से if I want to arrange r object, so question is arrange n object में से, arrange n object taken r at a time, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अरेंजमेंट ऑफ r object given n at time। ये दोनों का मतलब सेम है, and the notation is npr, and the formula is very simple, n factorial over n minus r the factorial। now ये कैसे है वो तो बनाना पड़ेगा ना, अपन को एक बनाना पड़ेगा। तो let us make this formula with an example. Okay, so let us see, एक अभी का रियल लाइफ का प्रॉब्लम देते हैं। प्रॉब्लम ऐसा है कि अपना क्लासेस है, क्लासेस के बाहर समझो 6 बच्चे लोग का फोटो चिपकाने का जगह है अपने पास। ये बहुत ज्यादा फोटोग्राफ हो गया।
ठीक है, लेकिन अपने 10 स्टूडेंट्स को 100 आया, अभी 14 आया है, बट 10 स्टूडेंट्स को 100 आया, सॉरी 14 नहीं है बच्चा, 12 स्टूडेंट्स है अपने, दिस ईयर वी हैव गॉट 12 स्टूडेंट्स, नॉट 14। जानवी, वो याद है एरर हुआ था, किधर है कि नहीं? यस सर, हाँ हो याद वो है 2 का सर। 99 था, हाँ वो 99 है। हाँ यस सर 99 is not 100, so be very happy with, I mean be very clear with that. Okay, so suppose we have 10 students scoring 100 on 100, but मेरे पास तो 10 ही स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट का जगह है फोटो लगाने के लिए। So basically what I have to do is I have to arrange this 6 photographs from given 10 photographs. So 10 things है मेरे पास and I want to arrange 6 things out of that. ठीक है, so this notation wise इसको लिखेंगे हम लोग 10p6 ways. But why is that equal to this answer? Let us verify that. Now so एक स्टूडेंट पकड़ो, से मेरा फेवरेट स्टूडेंट से श्रेया, ठीक है, श्रेया को इधर चिपका दिया, ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर चिपकाने के लिए कितना ऑप्शन था मेरे पास? सर 10 ऑप्शन था एंड यू चोज श्रेया को चिपकाने के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ सेकंड पिक्चर भी श्रेया का थोड़ी ना लगाऊंगा, डब्बा है क्या ऐसा ना, इतनी भी फेवरेट नहीं है अपनी, ठीक है। सो सेकंड पिक्चर लगाने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? एनीबॉडी? 9 ऑप्शन है, से अनन्या का चिपकाएंगे। नाउ कितना ऑप्शन रहेगा ये पिक्चर चिपकाने के लिए? 8 बाद में 8 बाद में 6 5 बाद में 5, 4 that's it, that's my answer. So that many options are there. Now can you complete the factorial? हाँ सर, I can complete the factorial, अभी मैंने सिखाया तुम लोग को फर्स्ट पार्ट में। लिख रहा हूँ 4 3 2 1 divide by 4 3 2 1, which is nothing but 10 factorial divided by 4 factorial is 10p6. But can you write 4 in terms of 10 and 6? Yes sir, we can write that. How? 10 factorial over 10 minus 6, the factorial is 10p6, and hence generalize करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा npr is equal to n factorial over n minus r the factorial. Now npr को और एक तरीके से लिख सकते हैं, npr is same thing as p n r, ऐसे ये भी तरीके से लिख सकते हैं, you can write like this, ठीक है। Okay, now few things to be noted. What is np0? Sir formula लगा दो, 1 it will be n factorial over n minus 0 the factorial, which is 0. n factorial over n factorial, which is 1. So note that np0 is simply 1. What will be np1? n factorial. n factorial over n minus 1 the factorial. लक्ष्य क्या करेगा? जो भी बड़ा है उसको expand करो. So it will be n into n minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial. ये उड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा n. ठीक है? So that will be your n. What will be npn? 1. So by the formula it will be nothing but n n factorial square over Infinity. तो सुन तो ले, n factorial over n minus n the factorial, which is n factorial upon 0 factorial. But last time I told you 0 factorial is nothing but 1. So answer is going to be n factorial. So npn is basically n factorial. अच्छे से लिख. So ये तीन वस्तु आपको नोट करनी है. Please write down the formula of npr. से अपने पास फेवरेट समय ये we call it 6 boys and 4 girls. ठीक है. So 6 boys and 4 girls are standing for a photograph. एक लाइन में खड़े रखें
ठीक है. So are to be arranged. ठीक है, to be arranged for photograph. For photographs. ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें एक बॉय कौन सा है मालूम है तो आपको कौन है? सोहम. और दूसरा एक गर्ल कौन सा है मालूम है ना? ए. ठीक है, तो 6 boys and 4 girls to be arranged for photograph. ठीक है, no problem. How many ways this can be done? So how many ways this can be done? If there is, so how many ways this can be done? If first subpart, no restriction. कोई कहाँ पे भी खड़ा रह सकता है, कोई इश्यू नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन. तो बेसिकली बेटा टोटल पब्लिक कितनी है? 10 पब्लिक है, करेक्ट. 6 boys and 4 girls. और आई वांट टू अरेंज हाउ मेनी? ऑब्वियसली सर 10 के 10 को अरेंज करो. सो 10p10 as just now we did. npn is n factorial, correct? So 10p10 is going to be 10 factorial. It's a huge number. That many number in which I can arrange my 10 people. ठीक है. Suppose I have a restriction. मेरी girls बहुत शर्माती है. ठीक है. So girls are very shy. So the next type is called girls are always together. So in any arrangement, you want girls to be together. So always together. This is the case. We call it always together. इसका स्पेशल नाम है, हम लोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? Always together. Always together का मतलब कंसीडर, एक सुपर मंत्र है इसके लिए. उसको बोलते हैं consider them as one. Consider them as one person only. Okay, ठीक है. तो कैसे करेंगे? तो भाई ये ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3 एंड गर्ल 4. बराबर है. ये कितना पब्लिक हो गया? 4 है, लेकिन गिनने का एक. हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 6. 6 बॉयज. अभी ये कितना पब्लिक हो गया? कैन यू टेल मी? 7. 7 पब्लिक हो गए. Now if I want to arrange these 7 people, how many ways I can arrange these 7 people? 7p7, that is 7 factorial. So that can be arranged in 7 factorial ways. But group of girls can be arranged within themselves. So if it's only group, then it can be arranged in 7 ways. So group of girls can be arranged within themselves. 4 girls can be arranged within themselves in how many ways? 4p4, which is 4p4, 4 factorial. So how 4 factorial? वापिस से गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर. तो कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं. गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर कैसे कंसीडर? तो फर्स्ट थिंग, कंसीडर देम एज वन पर्सन. ये एक कितना पब्लिक हो गया? नहीं सर, ये एक ही बंदा है. ठीक है, ग्रुप ऑफ गर्ल. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट 6 boys. All together there are 7 people. 7 people can be arranged within themselves in how many ways? So 7 factorial ways. कोई इशू नहीं है. Now this group of girls can be arranged within themselves in any arrangement, can be done in 4 factorial ways, isn't it? अभी ये girl 1 है, से G1, G2, G3, G4 बराबर है. अभी इसको मैं अरेंज करूंगा within themselves. How many ways that I can do? मतलब 4 girls can be arranged within themselves in 4 factorial ways, 4p4 ways, which is nothing but 4 factorial. Is that understood by you? ठीक है. So group of girls can be arranged within themselves in 4 factorial ways. ठीक है, कोई इशू नहीं है. Let's see the next part.
Okay. Now, third part, we call it girls are never together. Girls are not shy anymore. So girls are never together. Girls are never together. Remember this. इसको हम लोग टाइप बोलते हैं स्पेशल टाइप नेवर टुगेदर. तो उसमें क्या करने का, नेवर टुगेदर मतलब थ्रो देम आउट. ऐसा लिटरली नहीं, मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो 4 लड़कियों को भगा दो, तो कितने बॉयज बन गए? 6 बॉयज. 6 बॉयज को अरेंज करो. How many ways 6 boys can be arranged within themselves? 6p6 and 6 factorial. 6p6, which is 6 factorial ways. Let me write that 6 factorial ways. Now call them back. All girls वापिस आ गई. ठीक है. Now how many places will be there so that they are not together? Because बात कर रही है बहुत ज्यादा साथ में रहेगी तो they talk too much. तो क्या करना है? So how many places are there for girls? तो girls के लिए एक ये प्लेस बची है, एक ये बची है, एक ये बची है, एक ये बची है, एक ये बची है, एक बची है. Such that there is at least a boy in between. Suppose if I make girl 1 यहाँ पे, girl 2 यहाँ पे, girl 4 यहाँ पे और girl 3 यहाँ पे, then definitely there are boys in between. Are you getting it? ठीक है. So how many places are there for girls now? So there are 7 places for girls. But how many girls are there? 4 girls. 7 place 4 लड़की can be arranged in 74 ways. ठीक है. So girls are never together. ये केस हो गया. Number 4, girls are never together also means all girls are never together. No, also means no 2 girls are together. No 2 girls are together. No 2 girls are together मतलब क्या, एक भी नहीं चलेगी, 2 भी नहीं चलेगी, 3 भी नहीं चलेगी, 4 की 4 भी नहीं चलेगी. Obviously, no 2 girls together is a very strong statement. Number 4, all girls are never together. Now, what is this? It is very confusing. All girls are never together. अरे हटा. All girls are never together मतलब क्या? Sir, we can have 2 girls together, we can have 3 girls together, लेकिन 4 की 4 साथ में नहीं चाहिए मेरे को, because they talk too much. How you are going to handle this situation? Don't you think mathematically this is exactly opposite of this? ये क्या बोलता है? Girls are always together. उसका उल्टा करेंगे, all girls are never together होता है. So what you do is you find out all possibilities में से, this is called all possibilities. All possibilities. So what you can do here is all possibilities, which is one answer, minus girls are always together. निकाल दो. What you left is girls are never together. Let us take the 5th type, which is a very interesting one. Girls occupy odd places. ये कैसे करते हैं? So how many girls are there? 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, how many places are there? 6, 7, 8, 9, 10. How many are odd places? 1, 2, 3, 4, 5 odd places are there. And मेरे पास girls कितनी हैं? Sir, 4 girls we have. तो ये 5 में से 4 लड़की लोग को बिठाना है. How many ways I can do that? 5p4. I can do that task in very, very clearly 5p4 ways I can do that task. Now, suppose I have occupied 4 places by 4 girls. How many places are left now? 6. 5 of the even places and 1 of the odd place will remain ना यार. लड़की तो 4 ही है. इधर बिठाया, इधर बिठाया, इधर बिठाया, इधर, तो एक तो बच जाएगी ना.
basically what I'm trying to say is that now you have 6 places left plus 1 place will remain. So altogether I will be having 6 places left. And how many boys are left? 6. That can be done in 6p 6 ways, which is same thing as 6 factorial. So that's the answer for girls occupy even places. Now beta ये photograph का sum था, girls occupy odd places. Sorry. Now listen to me. Same question, same theory. हम लोग एक sum कर लेंगे. So can you repeat the last one? Yeah. Girls occupy odd places. मतलब you find out how many odd places are there. Sir, 5 odd places. How many girls are there? Sir, 4 girls. That can be done in 5p 4 ways. एकदम clear है? 5 place 4 लड़की बिठाने का है 5p 4 ways. You can arrange them. How many places are left? So 5 of the even places will be remaining and 1 of the odd place will remain. So altogether you will be having 10 places remaining. Sorry, all 6 places will remain. Okay. Now let's do same level पे. अभी देखो ये इसका application हर जगह पे आएगा. Let us take an example of the word. कौन सा ले? Let us take this word. Mother लेते हैं, mother. Let us arrange the letters of the word mother. How many different words with or without meaning can be formed if there is no restriction? Number 1, vowels are always together. Number 2, 3, vowels are never together. Number 4, all vowels are never together. कितने vowels से पहले वो तो चेक कर लूं मैं. 1 or 2 ही है. नहीं, ये नहीं चलेगा. मेरे को एक अच्छा वर्ड दो. चलो, give me a nice word. You have more than 2 vowels. Repetition. Without repetition. I want without repetition. India. आई 2 बार आता है. क्या रे, कहाँ से आती है? इक्वेशन ले लो. Okay. EQUATION. कुछ रिपीट नहीं कर रहा है ना? हाँ, नहीं कर रहा है. वावल्स कितने हैं? 1 2 3 5. ओ क्या बात है. 4. वावल्स आर नेवर टुगेदर. होएगा ये? 6 1 2 3 4 5 वावल है. क्या रे? एक सेकंड. AEUIOAOA फॉर ए. हाँ, अभी नाउ इट विल मेक सेंस. ओके, इक्वेशंस करना पड़ेगा. ठीक है, अभी vowels are never together make sense. Okay, vowels occupy odd places. I'm sorry, my battery is running low. बच्चों लोग ये लास्ट पार्ट है, मैं बता देता हूँ. फिर चैप्टर खत्म. नहीं भाई, चालू हो रहा है बराबर से. Now it will start. Okay, vowels are never together. Vowels all vowels are never together. ये नहीं आएगा यहाँ पे. Vowels occupy odd places भी आ सकता है. Vowels ये नहीं आएगा. Vowels occupy odd places. कैसे करेंगे भाई? तो कितने vowels से कितने consonants से वो चेक कर लो. तो we have 1 2 3 4 5 vowels and consonants कितने हैं? 4 consonants हैं. ठीक है, all together कितने हो गए हैं? 9 हो गए. If I don't have any restriction, what I should do? 9p9. 9p9 is 9 factorial. 9 ये clear हो गया factorial. सबको? Okay, next.
नेक्स्ट पार्ट, vowels are always together. तो क्या करने का, vowels are always together मतलब consider this 1 5% unit. as 1 unit and remaining 4 are not together. All together कितना public हो गया? 5 public. 5 public can be arranged within themselves in how many ways? 5 factorial. And this group of vowel can be arranged within themselves in 5 factorial ways. Vowels are never together. Next part. So never together मतलब क्या करने का, vowels को बाहर फेंक दो. Arrange the consonants. How many consonants are there? So there are 4 consonants. 4 consonants can be arranged within themselves in how many ways? 4 factorial. Now call back vowels. So vowel 1, vowel 2, vowel 3, vowel 4, vowel 5. 5 places are there and 5 vowels are there. They can be arranged within themselves in how many ways? 5p, 5 or 5 factorial ways. Vowels occupy odd places. Actually, it's the same sum. Vowels occupy the odd places. It's the same answer. So let's not discuss that here. Okay. So इससे सम आपको बना सकते हैं लोग. कैसा लगता है ये? अब सेकंड वाला वापस समझा सकते हो? Vowels are always together. Okay. So consider 5 vowels है ना, तो consider 5 को एक person बना दे. Always together मतलब क्या? Consider them one, right? Consider them one, right? So consider them मतलब क्या कर देते हैं हम लोग? 5 vowel को एक person करो और remaining 4 consonants. All together कितना public हो गया सर? 1, 2, 3, 4, 5 public हो गया. 5 public को कैसे arrange करेंगे? 5 factorial. And this group of vowels can be arranged within themselves in 5 factorial ways, right? Yes sir, I got it. So that can be done in 5 factorial. So beautiful. So for all these, So you have what's the difference? so we have to solve it completely, no? मतलब 5 factorial solve करके 5 factorial. Yeah. You have to do that. Yes, somebody was asking, beta. So what's the difference between? Go ahead. Okay. What's the difference between vowels are all together, are never together, and all vowels are never together? Okay. Vowels are never together is a very strong statement. Means no 2 vowels are together. No 2 vowels are together. मतलब E और U साथ में नहीं चलेगा. All vowels are never together. All vowels are never together means you can have 2 vowels together, you can have 3 vowels together, you can have 4 vowels together, but 5 के 5 साथ में नहीं चलेंगे. Are you getting it? Yes, sir. Okay. और यही कंसेप्ट आपको बार बार लगाना है हर एक जगह पे. ठीक है, इसमें बहुत सारे सम्स हैं. So I will suggest you should go through solved examples. Go through do solved examples before 8.3. 8.3 के पहले के सारे solved example देखना. No, there are 46 of them. इतना सारे नहीं मिल रहा है. रुक जाओ. Wednesday को मिल रहा है ना. So do 1 2 35. ठीक है. 8.3 हाँ भेज दूंगा अभी भेजेगा तेरे सामने. And 8. 8.2 के लिए दिख रहा है मेरे को टेक्स्ट में. सर हो सकता है तो सब क्वेश्चंस का पिक्चर भेज सकते हो. हाँ भेज दूंगा सारे क्वेश्चन का. सर टेक्स्ट बुक पुरानी है तो सब सेम नहीं है. सेम रहेगा. They do not take that much pain to change the textbook. Okay. Oh yeah. चलो एक काम करो, आज के लिए आप ये मत करो. आज के लिए सिर्फ 8.2 सॉल्व करो. हाँ ये कर सकते हैं आप.
8.2 सॉल्व पक्का कर पाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है. 8.3 आप नेक्स्ट क्लास में एक्सपर्ट की तरह से सॉल्व करेंगे. And that time we will not do the exercise. We will not do solved example. We'll do only exercise. That will be enough for the day. But chalo, see you next class on Wednesday.